हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ आज मैं फिर एक नया चैप्टर लेकर वन शॉट वन चैप्टर सीरीज में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पूरी ख़त्म कर ली है। इकोलॉजी के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हो गए हैं और आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है। अभी तक के लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन निकालने में हेल्प कर रहे हैं, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर ऑल द PYQs, फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट स्टे ट्यून्ड। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं चैप्टर में। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably the enormous diversity of life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate them. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. इसमें से आपका कोई भी important नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। Biodiversity. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all level of biological organization, ranging from macromolecules within cell to biomes. जितनी भी differences हैं, जितना भी आपका डाइवर्सिटी है, चाहे वो सेल में हो, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे बायोमीज में, वो हमें लेवल पर लेवल देखने को मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी इज टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किसने पॉपुलराइज किया है? एडवर्ड विल्सन। हम अब क्या करेंगे, हर एक पैराग्राफ में जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो साइड में नोट डाउन करते चलेंगे। उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और पूरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब combined diversity at the levels of biological organization. The two most important of them are genetic diversity and species diversity. Genetic diversity. A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by the medicinal plant Revolvia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical respine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice, 1,000 varieties of mangoes. Genetic diversity, एक species में जितनी diversity होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसी भी diversity से। ठीक है। Genetic diversity, हर एक इंसान के genes अलग हैं, इतने मिलियन जीन्स हैं, इतने मिलियन इंसान हैं, स्पीशीज़ हैं, सबके जीन्स अलग हैं, तो मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिलती है। जेनेटिक वेरिएशन का आपका एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, जो कौन सा है? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है। ये एक प्लांट है, कहाँ देखने को मिलता है? ये हिमालयन रेंजेस। और इसकी क्या खासियत है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है? सिक्रीट केमिकल which is reserpine, which secrete chemical called reserpine. ठीक है, ये आपने साइड में लिख लिया तो आपको पता है इस पैराग्राफ में क्या है। ये प्लांट के बारे में दिया गया है और कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है। दूसरा आता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल
Western Ghats have greater amphibian species diversity than Eastern Ghat. Species के लेवल पर diversity is species diversity. Western Ghat में amphibians ज़्यादा हैं as compared to Eastern Ghat, तो इसका मतलब Western Ghat में diversity amphibians की ज़्यादा है as compared to Eastern Ghat. Ecological diversity. Ecological diversity at the ecosystem level, India, for an instant, with its desert, rain, forest, mangroves, coral reef, wetlands, estuaries, alpine meadows, had a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. Norway, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू कंट्री लाइक अस. हमारे पास एस्ट्रीज है, एल्पाइंस हैं, डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सब सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया की एज कम्पेयर टू नॉर्वे बहुत ज़्यादा है. इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species losses continue. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern, as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being. जिस स्पीड से ये डाइवर्सिटी हम करी जा रही हैं, उस स्पीड से हम अगले 2 डेकेड में इनको खो देंगे. तो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन एक मेजर इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है. ठीक है. हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया? Since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on Earth. According to the IUC in 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Estimates vary widely, and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered in the tropic, biologists made a statistical comparison of the temperate tropical species richness of the exhaustively studied group of insects and explorate this ratio of other group of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on Earth. Some extreme estimates ranges from 20 to 50 billions, but a more conservative, scientifically sound estimate made by Robert May places the global diversity species at 7 million PYQ. वैसे तो अगर देखा जाए तो 20 to 50 मिलियन ग्लोबल डाइवर्सिटी बताई गई थी. बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में क्या बताई गई थी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ये बताई गई थी 7 मिलियन. ये आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में से, और आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये और एक दूसरा टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विच इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. ठीक है, चलो फिर अगला आते हैं यहाँ पर. Let us look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals. 70% animals. किसमें से? All recorded species. इस चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट नहीं है. इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट आपका ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको याद रखना है, ये साइड में लिख लो. इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं. While plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of total. 22% is plants. Plant में सब algae, fungi, bryophytes सब.
Among animals, insects are most rich species of taxonomic characteristic making up to 70% of total. अब ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की भी डिवीजन है जिसमें से 70% क्या है, इंसेक्ट. 70% is insect. Out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. Again, how do we explain this enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. फंगी की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ है फंगी की, अगर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स मिला भी दिए जाएं तो भी फंगी की जो स्पीशीज़ है वो उनसे ज़्यादा है. बायोडाइवर्सिटी दी गई है आपकी, ये आपकी इनवर्टिब्रेट्स के हैं, ये वर्टिब्रेट्स के हैं और ये प्लांट्स के हैं. अब ये ना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे. इनवर्टिब्रेट्स का ये जो आपका पाई चार्ट दिया है, ये आपका वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में हाफ ऑफ द प्लेस कौन लेता है, फिशेस. फिशेस 50% स्पेस ले लेती हैं. इनवर्टिब्रेट्स में अभी हमने देखा जो एनिमल था उसका 70% हिस्सा कौन ले रहा था, इंसेक्ट. तो ये जो 70% हिस्सा आपको दिख रहा है ये सब इंसेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स जो कि हमने क्लासीफाई नहीं करे हैं यहाँ पे, उसका मैक्सिमम हिस्सा हो जाएगा जो बचा है. फिर उसके बाद मोलस्क का और फिर क्रस्टेशियंस का. कैसे, इंसेक्ट, अदर एनिमल ग्रुप्स, मोलस्क और क्रस्टेशियंस. वर्टिब्रेट्स में आते हैं. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा फिश लेती है 50%. उसके बाद आपके बर्ड्स लेते हैं, रेप्टाइल्स लेते हैं, एम्फीबियंस लेते हैं और मैमल्स लेते हैं. कैसे, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस. ठीक है. अगला देखते हैं हम प्लांट्स. प्लांट्स में फंजाई, ये जो फंगी है, फंगी आपका बहुत हिस्सा ले जाती है. उसके बाद फंगी और एंजियोस्पर्म ये बराबरी पे चलते हैं. एंजियोस्पर्म आप देखते होंगे जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं सारी एंजियोस्पर्म है मोस्टली. ठीक है. फंजी और एंजियोस्पर्म आमने सामने. उसके बाद एल्गे, फिर उसके बाद मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज एंड लेटेंस. ये आपको देख के तीनों अलग अलग पाई चार्ट समझ आने चाहिए. वर्टिब्रेट का कौन सा है, इनवर्टिब्रेट का कौन सा है और प्लांट्स का कौन सा है. ठीक है. It should be noted that these estimates do not give any figure about prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory conditions. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. प्रोकैरियोटिक का अभी भी कोई भी हिसाब नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं. अगला, although India has 2.4% of the world land area, its share to the global diversity is impressive 8.1%. इंडिया का वर्ल्ड में India's share in world's land कितना है, 2.4%. ठीक है. और ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये 8.1%. ठीक है. That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries in the world. Nearly 45,000 species of plants and twice as many as animals have been recorded from India. कितनी species? 45,000 किसकी, plants की, और इससे डबल animals की. How many living species are there actually waiting to be discovered and named? If we accept May Global's estimates, only 22% of the total species have been recorded so far. अगर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग देखें, रॉबर्ट मे, तो कितनी 22% स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हुई हैं. 22% स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हुई हैं. अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स, वी एस्टिमेट दैट आर प्रोबेबली more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered. Consider the immense trained power, ये आप काट सकते हैं.
हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हमें कैसे कैसे और किस पैटर्न में मिलती है. ठीक है. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution. For many group of animals and plants, there are interesting patterns in diversity. The most well-known being latitudinal gradient in the diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है. जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ, अगर इंडिया की बात करें, इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास डाइवर्सिटी रिच होती है. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती जाती है. विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंजेस 25.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate or polar areas. Colombia, located near the equator, have 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species. क्या लिखोगे? कोलंबिया कितना? इक्वेटर के पास 1400 स्पीशीज़ हैं. ठीक है. वहीं अगर न्यूयॉर्क देखें, न्यूयॉर्क तो इसके पास कितनी है? 105. और कितने पे है ये? 41 डिग्री नॉर्थ पर इक्वेटर से. ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीशीज़. इसके बाद ग्रीनलैंड कितना? 71 डिग्री नॉर्थ, कितनी स्पीशीज़ हैं इसके पास? 56. India, with much of its land area in the tropical latitude, has more than 1200 species of birds. A tropic forest in the tropical region like equator has up to 10 times as many species of vascular plants as forest of equal area in a temperate region like Midwest of the USA. The largely tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. It is home for more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 4 to 7 of mammals, 4 to 7 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates. Scientists estimates that in this rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. ये आप कर लो important. इसमें से सारे फिगर्स आप साइड में लिख लेंगे, आने के चांसेस रहेंगे. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important of them are speciation, as generally is a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a limited evolutionary time for species diversification. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promotes niche specialization and leads to greater diversity. Tropical environment, सबसे पहला था speciation, फिर है tropical environment, or there is more solar energy available in the tropics which contributes to higher productivity, in turn might contribute to indirectly greater diversity. इसका है high sunlight. 3 रीज़न जो कि आपके डाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं स्पीशिएशन, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट और हाई सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी. दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ड्यूरिंग दिस, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग his pioneer and extensive exploration in wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, ये important है. German naturalist and geographer कौन? Alexander von Humboldt observed, क्या observed किया? Within a region, species richness increased with increasing explored area, but only to a limit. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turn out to be rectangular hyperbola. किसी भी एरिया में स्पीशीज़ बढ़ती जाती है जितना उसका एरिया बढ़ता है, जितना उसका एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक. उसका
जो आपका ग्राफ होता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक. On logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s plus equals to log c plus z log a. s क्या है, species richness, आपका z क्या है, slope of line, a क्या है आपका area और c क्या है आपका intercept. ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये बहुत बेसिक इक्वेशन है. log s equals to log c plus z log a. ठीक है. Ecologists have discovered that the value of z lie in range for 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region. z की एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई है 0.1 और 0.2 के बीच, जो कि सेम रहेगी. Whether it is in the plants in Britain, birds in California, mollusks in New York State, the slope of the regression line are amazingly smaller. But if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, you will find the slope of line is much steeper. Z values ranges from 0.6 to 1.2. अगर हम पूरा एक एरिया लें, सिर्फ स्पीशीज ना लें, हम पूरा एरिया लें तो Z की जो वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.2 आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर frugivorous fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.1. Frugivorous और birds और mammals tropical forest के लिए Z वैल्यू क्या रहेगी 1.15 और entire continents के लिए 0.6 से 1.2 और आपका नॉर्मल Z वैल्यू 0.1 से 0.2. ये देख सकते हैं आप स्पीशीज एरिया रिलेशन का आपका ये ग्राफ है, जो कि एक लॉग स्केल है, स्ट्रेट लाइन आता है. log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a. और ये जो आपका हाइपरबोला है s इक्वल्स टू c z a z, s इक्वल्स टू c a z. The importance of species diversity to ecosystem. Does the number of species in community really matters to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. For many decades, ecologists believe that community with more species generally tends to be more stable than those with less species. What exactly is stability for a community? The stable community does not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance, natural or man-made, and it must not be resistant to invasion by alien species. We do not know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Timston long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answer. इसमें से कौन याद रखना है? David Timston. क्या करा इन्होंने? Found that plot with more species show less year-to-year variation in total biomass. He showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. इन्होंने क्या बोला? Increased diversity leads to higher productivity. ठीक है. Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its trees, frog species, is lost forever? How is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? There are no direct answer to such naive question, but we can develop a proper perspective through an analogy. The rivet proper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. Rivet proper hypothesis किसने दी थी? Stanford ecologist और वो कौन है? Paul Ehrlich. In an airplane ecosystem, airplane उन्होंने किससे कंपेयर किया? इकोसिस्टम से. All paths are joined together using thousands of rivulets. Rivulets उसके साइड के paths होते हैं. Species इकोसिस्टम में rivulets, airplane में rivulets और इकोसिस्टम के लिए species. If every passenger traveling in it start popping a rivulet to take home, causing a species to be extinct, it may not affect flight safety, proper functioning of ecosystem initially.
But as more and more rivets were removed, the plane became dangerously weak over a period of time. Furthermore, when which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem function, is obviously more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seat or the window inside the plane. प्लेन है, प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो जुड़े हैं आपस से रिवरेट से. जितने भी पैसेंजर है प्लेन में सब अपना हक समझ रहे हैं. अगर एक एक रिवरेट्स वो लेके जाना चाहें तो क्या प्लेन पे असर पड़ेगा? डिपेंड्स. अगर विंग्स वाले या जो उसके साइड के रिवरेट्स हैं वो लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट है प्लेन पर. प्लेन क्रैश हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है. ठीक है, इन ल्यू कि अगर आप अंदर चेयर के लोगे कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, नहीं इतना अफेक्ट होगा. सेम गोज फॉर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में स्पीशीज़ है, अगर हर स्पीशीज़ इकोसिस्टम का एक एक पार्ट लेके जाएगी, एक्सटेंड होता रहेगा और अगर मेजर पार्ट एक्सटेंड हो गया तो पूरा इकोसिस्टम ही हिल जाएगा. ये थी रिवर पॉपर हाइपोथेसिस. ठीक है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activity. The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led the extinction of more than 2,000 species of native birds. The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 339 invertebrates and 87 planets in last 500 years. Important mark करेंगे. Some example of recent extinction include dodo, Mauritius, quagga, Africa, thylacine, Australia, steelers, seal cow, Russia, and 3 subspecies, Bali chiven and Caspian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Carefully analyze the record shown that the extinction across taxa are not random. Some group-like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing threat of extinction. Presently, 12% of bird species, 23% of mammal species, 32% of amphibian species, and 31% of gymnosperm species in the world face the threat of extinction. इसमें important ये आपको पढ़ना है. From a study of the history of life on Earth through fossil record, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently withstanding have also happened earlier. Even before humans appeared on the scene during the long period since the origin and diversification of life on Earth, there are 5 episodes of mass extinction of species. However, 6 extinction presently is progress different from the previous episode. The difference in the rates. The current species extinction rate are estimated to be 100 to 1,000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. In general, loss of biodiversity in the region may lead to decline in plant production, lower resistance to environmental perturbation such as drought, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest, disease cycle. Causes of biodiversity losses. हम causes देखने वाले हैं. The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. There are 4 major causes. The evil quadrate is the sobriquet used to describe them. Evil quadrate is used to describe biodiversity losses. सबसे पहला है habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss comes from tropical rainforest. Once covering more than 14% of the earthland, these rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 100 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called lungs of the planet, harboring probably millions of species, is being cut and cleared for cultivating soya beans or for conservation of grassland for raising beef cattle. Amazon rainforest क्यों काटा जा रहा है? सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए और बीफ कैटल के conservation of grassland for beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities,
Mammals, birds requiring large territories, and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. Overexploitation, पहला था आपका fragmentation और diversity loss. अब है overexploitation. Human have always depended on nature for food, shelter, but when need turn to greed, it leads to overexploitation of natural resources. Many species extinction in the last 500 years, deer, cows, passenger pigeons, were due to overexploitation by human. Presently, many marine fishes population around the world are over-harvested, endangering the continued extinction of some commercially important species. Alien species invasion मतलब किसी और का बाहर से एक स्पीशी के जो इन्वायरमेंट है उसमें आ जाना, जिसकी वजह से जो वहाँ प्रेजेंट स्पीशीज थी उसका एक्सटिंक्शन होना. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline and extinction of indigenous species. The Nile perch, introduced into Lake Victoria in East Africa, led eventually the extinction of an ecological unique assemblance of more than 200 species of cichlid fish in the lake. Lake Victoria किसमें? ईस्ट अफ्रीका. क्या प्रेजेंट थी? क्या इंट्रोड्यूस किया गया आपका? नील पर्च. और एक्सटिंक्ट कौन हुआ? चिचलिड फिश. चिचलिड फिश कितनी स्पीशीज? मोर देन 200 स्पीशीज. ठीक है. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed by a native species by invasive weed like carrot grass, Parthenium, lantana, and water hyacinth econia. The recent illegal introduction of African catfish, Clariasis garipinus, for aquaculture purposes posing a threat to indigenous catfish in our river. ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको मार्क कर लेना है. Co-extinction. When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblance of parasites also meets the same fate. Another example in case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to extinction of the other. एक के मर जाने के बाद जो उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज होती है वो भी मर जाती है. Biodiversity conservation. Why should we conserve biodiversity? There are many reasons, some obvious or others are not obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. Narrowly, arguments for conserving biodiversity are obvious. ये जो आपके arguments होते हैं ये obviously biodiversity के लिए important हैं. Humans derive countless direct economic benefits from nature: food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, ये सारा. More than 25% of the drug currently sold in market worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicine used by native people of around the world. Nobody knows how many medicinal useful plants are there in tropical rainforests waiting to be explored. With increasing resources but into prospecting, exploring molecular genetics, species level diversity for product of economic importance, nation endowed with rich diversity can accept a rich enormous benefit. The broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth atmosphere. Can we put an economical value to this service by nature? You can get some idea by finding out how many neighbor hospitals sends by a cylinder of oxygen. Pollination, without which plant cannot give us fruit or seed, is another service. Amazon rainforest oxygen provide कर रहा है, which is our necessity. Pollination, fruit और seed दे रहे हैं हमें, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है. Ecosystem provides through pollinator layers, bee, bumblebee, birds and bats. There are other intangible benefits that we derive from nature: the aesthetic pleasure of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, or walking up to bulbul song in the morning. The ethical arguments for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plants, animals, and microbe species with whom we share this planet. Physiologically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if may not be current or any economic value to us.
We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. How we can conserve biodiversity? We can conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level. It's protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ or on-site conservation. जब हम एक चीज़ को बचाने के लिए पूरा वो एरिया बचाते हैं, that is in situ conservation. However, when there are situations when an animal or plant is endangered or threatened and needs urgent measure to save it from extinction, ex situ off-site conservation is the desirable source. जब हम ये देखते हैं कि एक पूरा एक्सटेंट होने ही वाला है तो हम उसे बचाने के लिए ex situ conservation करते हैं. In situ conservation देखते हैं. Faced with the conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with high level of species richness and high degree of endemism. That is, endemism is species confined to that region and not found anywhere else. तो इसलिए हमें वो पूरा एरिया ही प्रिजर्व करना पड़ता है. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of diversity hotspots to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover over countries exceptionally high biodiversity region. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species that collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction up to 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions legally protected are as biosphere reserve, national park and sanctuaries. India now has 14 biosphere reserve, important BYQ, 90 national park, 448 wildlife sanctuaries. India also has history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside. All the trees, wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Kashi and Chintia hills of Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka, Maharashtra and Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, sacred groves of the last refugees for a large number of rare and threatened plants. इसको आप important mark करेंगे और इसको learn करेंगे. In situ मतलब अंदर, एक एरिया के अंदर ही उसका प्रोटेक्शन करना. Ex situ is उस एरिया से उसको बाहर निकाल के प्रोटेक्शन करना. ठीक है? Ex situ conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical garden and garden safari parks serve this purpose. Zoological parks, botanical garden, wildlife safari are ex situ conservation. There are many animals that become extinct in the wild and continue to maintain in zoological park. In recent years, ex situ conservation have advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for a long period using cryopreservation techniques. Egg can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture method. Seed of different genetic strain of commercially important plants are kept for longer period in seed bank. Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. ये आपका important है और PYQ भी है. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level. ये था आपका biodiversity and conservation. I hope आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और कैसे बनेंगे. ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. जिसको भी कोई भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है. लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. कल मिलेंगे आपसे एक और नए लेक्चर के साथ. टिल देन पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.
थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।